हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। सो नेक्स्ट वी हैव सीन द क्वेश्चन थर्ड ए, सॉरी फोर्थ ए, एंड अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन थर्ड का ए। ठीक है, तो एक अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको हम करके देखते हैं। ओके, सो द इनलेट एंड थ्रोट diameter of a horizontal venturi meters are given. The liquid flowing through the meter is water. The pressure intensity at inlet is 13.734 kilonewton per meter square, while the vacuum pressure is 37 centimeter of mercury. And we have to calculate the rate of flow. And it is given that assume 4% of the differential head is lost between inlet and outlet. Okay. सो सबसे पहले जो प्रेशर्स दिए हुए हैं हम इनको एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रेशर दिया हुआ है ये हमें किस में दिया हुआ है, गेज प्रेशर है, और ये हमें वैक्यूम प्रेशर दिया हुआ है। सो व्हाट इज़ एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर हमें गेज प्रेशर दिया होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, एब्सोल्यूट प्रेशर। यहाँ गेज प्रेशर कितना दिया हुआ है, 13.734 इंटू 10³ प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कितना होता है, 1.01325 इंटू 10⁵ तो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर कितना आ जाएगा, 115.05 इंटू 10³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये पॉइंट 1 पे हो जाएगा। पॉइंट 2 पे हमें वैक्यूम प्रेशर दे रखा है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर कितना हो जाएगा, अगर हमें वैक्यूम प्रेशर दिया होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर एट पॉइंट 2 इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है, 1.01325 इंटू 10⁵ एंड व्हाट इज वैक्यूम प्रेशर, इट इज 37 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी. So you have to convert 37 centimeter of mercury. So what is vacuum pressure is equal to rho g h हम यूज़ करेंगे, rho g h। डेंसिटी कितनी हो जाएगी, ये मरकरी है तो मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है, 13,13600। जी कितना होता है, 9.81, और h कितना दिया हुआ है हमें, 37, तो 0.37। हाउ मच इट कम्स टू बी 49.36 into 10³. So it comes to be 49.36 into 10³. We put the value here, minus 49.36 into 10³. We solve this, and how much we get, it is 51.96 into 10³ Newton per meter square. Okay. So now we got absolute pressure at both the points. Next, we use the continuity equation. So what is continuity equation? It is A1 V1 is equal to A2 V2. A1 कितना दिया हुआ है हमें, 30 सेंटीमीटर इनलेट का डायमीटर दिया हुआ है, और एग्जिट का कितना दिया हुआ है, थ्रोट का कितना दिया हुआ है, सॉरी, इट इज 10 सेंटीमीटर। तो A1 इज A/4 into D1 square. D1 is 30. So it will become 0.3 square into V1 is equal to pi/4 into 0.1 square into V2. So we cancel this pi/4. So V2 is equal to, we divide this. So V2 is equal to 9V1. यहाँ तक तो ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमें एक कंडीशन दी हुई है कि जो हेड लॉस हो रहा है वो कितना है, 4% ऑफ द डिफरेंशियल हेड इज लॉस्ट। So this is important. So HF is equal to 4%, 4% of the differential head. Okay. So differential head. So this is absolute pressure. This is also absolute pressure. So what is differential head at point 1? So differential head मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एब्सोल्यूट प्रेशर 1 पे कितना दिया हुआ है हमें, 115.05, 115.05 into 10³
तो हेड कितना हो जाएगा, डिफरेंशियल प्रेशर हेड एट पॉइंट वन, सो वी राइट इट H1, so it is 115.05 into 10 cube divide by rho g, rho यानी कि density multiplied by g. Okay, so we solve this, it comes out to be 11.72 meter. Okay, now what is the absolute pressure at point 2? Absolute pressure at point 2 is equal to 51.93. So it is 51.93 into 10 cube. Now what is differential? Now what is head at point 2? H2 is equal to 51.93 into 10 cube divided by rho g. Rho is 1000 into g is 9.81. So it comes out to be 5.29 मीटर. तो यहाँ पे जो एच एफ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 4% ऑफ द डिफरेंशियल हेड, यानी कि H1 माइनस H2. सो इट इज इक्वल टू 0.04 इंटू H1 इज 11.72, H2 is 5.29. So it comes out to be HF comes out to be, let me check it. It is 0.2572. So it comes out to be 0.2572 meter. So now apply Bernoulli equation. P1 upon rho g, P absolute 1 upon rho g plus V1 square upon 2g plus Y1 is equal to P2 upon rho g, P absolute 2 upon rho g plus V2 square upon 2g plus Y2 plus HF. अब y1 और y2 तो बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, because it is a horizontal venturi meter. Okay, so y1 is equal to y2. अब p absolute rho g हमने कैलकुलेट किया था, कितनी आई थी इसकी वैल्यू, 11.72. so we write it 11.72 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2g और v2 स्क्वायर बाई 2g. हमें एक रिलेशन पता है v2 और v1 में, कितना है, v2 is equal to 9v1. Okay, so we write it v1 square upon 2g is equal to, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है 5.29. we write it 5.29 and we place the value of v2. v2 is equal to 9v1, so it will become 81v1 square upon 2g plus, what is the value of hf, it is 0.2572. so it is 0.2572. Okay, so now we calculate the value of v1 from this equation. So v1 comes out to be, so you place it, you write it like this, minus 5.29 minus 0.2572 is equal to 81 v1 square by 2g minus v1 square by 2g. So what is the value of v1? v1 comes out to be 1.23. Okay, so v1 comes out to be 1.23 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब सॉल्व करिएगा, v1 आपको इतना ही मिलेगा. तो रेट ऑफ फ्लो कितना हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो Q इज इक्वल टू A1 V1. तो A1 हमें कितना दिया हुआ है, पाई बाई 4 इंटू 0.3 स्क्वायर इंटू 1.23. Okay, so you solve this, you will get this rate of flow 0.086 meter cube per second. Okay, hopefully you got this. What is the rate of flow? It comes out to be 0.086 meter cube per second. Next उसने हमसे पूछा है CD, coefficient of discharge. How we calculate CD? So I'm clearing all this. Okay, इसको मिटा देता हूँ. Next, we have a formula of discharge. What is the formula of discharge? Q is equal to CD A1 A2 upon under root A1 square minus A2 square root 2G PH. Okay, so Q हमने कैलकुलेट कर लिया था 0.086. CD की वैल्यू हमें निकालनी है. A1 कितना है,
pi by 4 into 0.3 square into A2 is pi by 4 into 0.1 square divide by, we write it pi by 4 into 0.3 square इसका whole square minus pi by 4 into 0.1 का square इसका whole square multiplied by 2 into g into, what is the value of this pH? pH is H1 minus H2. Okay, so what is H1? It is 11.72, H2 is 5.2. It is 11.72 minus 5.29. So it comes out to be 6.44. Okay, 6.44. नाउ आपको सी डी की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब वैल्यू आपको पता है, आप सॉल्व कर लीजिएगा. सी डी कम्स आउट टू बी 0.96. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल कैलकुलेटिंग सी बी डी, क्योंकि इक्वेशन थोड़ी बड़ी है, आपको सॉल्व करने में बहुत सावधानी से सॉल्व करिएगा. जी की वैल्यू आप ध्यान रखिएगा 9.81 है. दिस इज़ करेक्ट. अगर आपका ये नहीं आ रहा है तो यू मस्ट चेक योर कैलकुलेशन. एवरीथिंग इज करेक्ट. ट्राई अगेन and you will get this answer. Okay, so I hope you enjoyed this video. So what is the value of CD? It comes out to be 0.96. वैसे CD होता क्या है? CD होता है हमारा, so let me write it here. Let me hear this. जस्ट लास्ट में CD होता क्या है? CD होता है हमारा coefficient of discharge. Okay, and it is equal to actual discharge upon theoretical discharge. Okay, so this is the coefficient. Similarly, you have CC also and CV also. It is coefficient of velocity and it is coefficient of contraction. Okay, so hopefully you like this video, and if you like this video you can like my channel and subscribe it so that आपको आगे और सॉल्यूशंस मिल जाए. ठीक है, थैंक यू.